गुड इवनिंग एंड हेलो टू ईच एंड एवरीवन। जितने भी लोग आज इस वेबिनार में इस पॉडकास्ट में हैं, आप सभी लोगों का वेलोसिटी जेनेटिक्स की तरफ से और फिट भारत मिशन की तरफ से हार्दिक स्वागत है। सो दिस इज अ एजुकेशनल सीरीज जो हम लोग करते हैं हफ्ते में एक बार, एंड वी ब्रिंग इन एन एक्सपर्ट जो जेनेटिक्स की दुनिया की जो इनोवेशंस हैं और जेनेटिक्स हमारे सबके जीवन के लिए कितना जरूरी है, इसके बारे में हम लोग बातें करते हैं। इट्स प्योरली एजुकेशनल। और आप इस सब्जेक्ट को लेके जब सुनते हैं, आखिर में इस पॉडकास्ट इस वेबिनार के एंड में आपको अपने क्वेश्चंस को भी पूछने का मौका मिलेगा, एंड यू विल बी एबल टू एनहांस योर नॉलेज in the field of health and wellness, especially from a genetics perspective. So let's begin the day this evening. I will start with welcoming you once again for this educational webinar. And अगर आप velocity genetics से परिचय नहीं है, तो I would like to introduce you to velocity genetics. So we started way back in 2017, or we are the pioneers, one of the pioneers and market leaders in gene based wellness solutions in India. पिछले करीबन 8 साल से हम लोग वेलोसिटी जेनेटिक्स के जरिए लोगों को जेनेटिक्स का महत्व आज के दिन में कितना जरूरी है, कितना ज्यादा है, इसके बारे में अवेयर कर रहे हैं। तो इसके लिए वी हैव वेलोसिटी जेनेटिक्स डीएनए टेस्टिंग प्रोग्राम एडवांस्ड, एक प्रोडक्ट that helps people understand their own genetic strengths and weaknesses, और इसके तहत वो एक जीन बेस्ड वेलनेस लाइफ को जी सकते हैं। एंड सिंस जेनेटिक्स, थोड़ा जब जेनेटिक्स की बात करते हैं थोड़ा ऐसा लगता है कि काफी नॉलेजेबल, इंटेलिजेंस या रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए वी हैव इंस्टीट्यूट कॉल्ड Velocity Institute of Genomics, Nutrition and Entrepreneurship Training. इसके तहत we are making genetics and everything related to genetics simplified version, so that एक आम व्यक्ति इसके बारे में जान सकता है, and then you and I will be able to understand कि मेरे अच्छे स्वास्थ्य के लिए, मेरे वेल बीइंग के लिए जेनेटिक्स कितना जरूरी है, कितना इम्पोर्टेंस है। So, once again, a very, very warm welcome to you to this webinar and podcast. So, मेरा invitation आप सभी लोगों के लिए है कि in the next 60 minutes or less than around 50 minutes, it's already 8:10. So, we are going to discuss about very, very interesting topics. तो genomic wellness के बारे में, क्योंकि हेल्थ के पहले वेलनेस आ जाता है कि अगर वेलनेस को हम लोगों ने अच्छी तरीके से संभाला है तो हमको हेल्थ इंडस्ट्री में, द सो कॉल्ड हेल्थ इंडस्ट्री टुडे इज गिविंग अ डिफरेंट connotations और डिफरेंट मीनिंग, जहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन है, ट्रीटमेंट है, इंजेक्शंस है, टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, सर्जरीज हैं। तो ये सभी दुनिया में जाने के पहले we can all enjoy genomic wellness, and इसके लिए मैं इनवाइट करूंगा आप सभी लोगों को कि how we can proactively इस वेल बीइंग को हम लोग आजमा सकते हैं। और उसके लिए अगर वो करेंगे, so we'll live a healthier, happier and a longer life, and everybody wants to do it. तो इसके लिए आज के सेशन, आज का वेबिनार जो है, काफी आपको इनपुट्स, बहुत सारे इनसाइट्स दे देगा। So, if you do not know me personally, quickly I want to browse through. My name is Stan Serrao और मैं Velocity Genetics का CMD हूँ। हालांकि मैं प्रिंट मीडिया और जर्नलिज्म बैकग्राउंड से आता हूँ, but I got introduced to the world of wellness way back in 2004. So 21 years पहले मुझे वेलनेस की दुनिया की परिचय हो गई, and then ever since then मैं इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था, तो I started conducting seminars, workshops and scientific symposiums with a lot of like-minded मेडिकल फ्रेटर्निटी के जो मेरे कलीग्स हैं, या हेल्थ एंड वेलनेस के, लाइफस्टाइल के, या ऑल्टरनेटिव हीलिंग के लोग हैं, उनके साथ मिलके कई सारे वेलनेस के इनिशिएटिव्स को हम लोगों ने प्रोपोगेट किया ऑल ओवर इंडिया। एंड देन आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू द वर्ल्ड ऑफ प्रेडिक्टिव जेनेटिक्स, जेनेटिक टेस्टिंग, डीएनए टेस्टिंग, विच इज प्रेडिक्टिव इन नेचर। क्योंकि कई बार हम लोग जब बहुत सारे कुछ दवाइयां करते हैं या बहुत सारे अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट करते हैं, दे डोंट रेस्पॉन्ड।
and the same medicines or same supplements don't respond equally in everybody. So there is a difference. So what could be that gap? ये gap है understanding that we all are unique. तो ये मुझे सीखने का मौका मिला way back in 2010, and in 2016 after a little prolonged research and understanding about this field, हम लोगों ने 2016 में वेलोसिटी लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना की. सो इन शॉर्ट वी आर नोन एज वेलोसिटी जेनेटिक्स. सो यहाँ पर एक bespoke यानी कि कस्टमाइज्ड या पर्सनलाइज्ड जीन बेस्ड वेलनेस सॉल्यूशंस हम लोग देते हैं लोगों को. एंड इन द लास्ट 7-8 years हम लोगों ने करीबन 13,000 लोगों से भी ज्यादा लोगों को जीन बेस्ड वेलनेस का मतलब समझा दिया है. We have created that kind of an awareness, and we have also given them gene-based wellness solutions. And obviously, in our 8th year, last 2 months back, we got as one of the best DNA companies in India, award I received from Amrita Rao, a Bollywood actress in Bangalore. So, comprehensive DNA testing programs हम लोगों ने launch किया था 2017 में. We are now made it a little more better, and then we have now the advanced version. So today, as you know, आपका जो posters आपने देखे रहेंगे, banners देखे रहेंगे. Last week हमारे साथ थे डॉक्टर अमोल राउत, and today we have डॉक्टर निखिल बलजेकर. So निखिल बलजेकर की अगर थोड़ी सी मैं परिचय दे दूं before we get into the actual session of his. मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर निखिल बलजेकर इज अ मेडिकल प्रोफेशनल. ही इज अ कंसल्टेंट सर्जन एंड यूरोलॉजिस्ट. he practices in Mumbai, in Maharashtra, and in Belgaum या Belagavi in Karnataka. And he owned a 25-bedded hospital in Belgaum from 87 to 2004, 2014. Almost 27 years उन्होंने अपना खुद का हॉस्पिटल में लोगों का ट्रीटमेंट किया हुआ है. He then is a visiting consultant to ESI Hospital, Dakshata Critical Care Center, etc. Also in Belgaum, he now visits Cardinal Gracious Hospital run by the Christian nuns. And then he was also a resident doctor in Inlax General Hospital in Mumbai, 2 stints, one from 2015 to 17, and then being a director of surgery and visiting consultant surgeon from 2017 to 19. एंड डॉक्टर की खासियत है, मुझे उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला है कई सालों से. एंड ही इज वन डॉक्टर विद अ लॉट ऑफ डिफरेंस. एंड डिफरेंस ये है कि ही वांट्स द मेडिकल प्रैक्टिशन टू बी डन विद पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच विद एथिकल अप्रोच. आज जैसे हर फील्ड में कुछ ना कुछ अनएथिकल या अननेसेसरी चीजों का प्रेजेंस तो है ही. But I've known Dr. Nikhil Baljekar very closely for the last 7-8 years. एंड उनके विचार, उनका जो एम्पैथी जो कस्टमर के तहत है. आज इंडिया में अलग अलग इकोनॉमिक के ग्रुप आते हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस के ग्रुप आते हैं, एंड द वे ही ट्रीट्स देम इज विद अ लॉट ऑफ डिफरेंस. नाउ ये डॉक्टर का मेडिकल चेहरा हो गया. ही आल्सो हैज अनदर फेस, अनदर आइडेंटिटी एज एन एंटरप्रेन्योर. ही इज अ वेरी सीजन्ड एंटरप्रेन्योर. ही इज अ वेरी प्रोलिफिक स्पीकर in various trade forums, and especially he is an independent technical and financial analyst. He is also a NSE certified market professional, member of AMFI, IRDA license holder, and MDRT member. And he's in the equity market and insurance. He is quite a passionate person. So passion and profession दोनों को डॉक्टर निखिल बलजेकर करते हैं. So I would like to request Dr. Nikhil Baljekar to switch his video on if he can, and I would like to introduce you to everyone who is here. Good evening, Dr. Nikhil Baljekar. Warm welcome. Good evening. Namaste to everybody. So, Dr. Nikhil Baljekar, मेरा पहला सवाल ये है कि जब हम लोग जेनेटिक्स की बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, थोड़ा डॉक्टर्स लोग थोड़ा सा उसमें से पीछे हटते हैं और ज्यादा इसको प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, रेकमेंड नहीं करते हैं. उनको ऐसा लगता है कि कई बार डॉक्टर ने ये भी चीज बोला है, सब बेकार है, बुलशिट है, इसमें कुछ नहीं होता है. बट आई थिंक ये सिनेरियो अभी थोड़ा चेंज हो रहा है. वेदर इट इज न्यूट्रिशन, वेदर इट इज लाइफस्टाइल, वेदर इट इज जेनेटिक्स, आई थिंक डॉक्टर्स आर नाउ more receptive. When I say doctors, I'm talking about medical health, Allopathic doctors, allopathic doctors. modern So medicine. what's the talk? What's the talk कि जेनेटिक्स के बारे में हो, न्यूट्रिशन के बारे में हो, लाइफस्टाइल के बारे में हो,
जब डॉक्टर्स भी साथ में मिलते हैं, व्हाट्स द डिस्कशन हैपनिंग? Well, thank you for inviting me for this program, and hello to everybody and a good evening. So, answering your question, Stan, I think that two things. One, earlier when we first started, around 8 years ago, the proportion of doctors who used to believe in all this, what we call broadly as preventive and predictive medicine, where we prevent the disease from appearing completely, and predictive medicine. That means we predict what is likely to happen with DNA analysis. That was not really common knowledge, because genetics as a subject, as an independent subject, is not a very big subject in the modern medicine training. It is changing. It is changing. And I met a few aspirants who want to join medicine to take up genetics. So that was first thing. I mean, they don't want to do surgery, medicine, gynec, orthopedics. They want to do genetics. So this is happening. I think there is also an influence of social media, because a lot of people independently are talking about wellness, as you said in your introduction. And DNA is very much joined like a twin. These conjoined twins, what are they called? These twins which are joined in the body, two people having one body. It's like wellness and DNA analysis is joined. You can't have one without the other, because at the heart of the wellness industry is you are trying to prevent the disease. You're not treating the disease. Modern medicine treats a disease after it has appeared, whereas the entire focus of wellness is not to allow the disease to appear in the first place. Now, unless and until you have a DNA analysis of an individual, you are not likely to predict what kind of diseases he or she is prone to. Therefore, it is imperative that DNA testing has to be done if you want to be in any part of the wellness industry. Since modern medicine does not, rather, I would say it's a contradiction. If everybody is well, where will the patients come for the doctors, you see? So it's inherently contradictory for modern medicine to welcome genetics with open arms, but they are forced to. And today what we are going to discuss is how this modern medicine is going to be forced to change in the near future, only because the focus is now more and more on wellness. Yes, yes. So I think things are changing is what you're saying. And क्या करेंगे हम लोग in the next 15-20 minutes we will talk about the subject जो आप सभी लोगों को हम लोगों ने बताया ही है, and Dr. Nikhil Baljekar also has made some notes on this. So what I will do is that I will share the screen where you can explain about what are the major changes or what are the trends that are emerging in the field of modern healthcare with regard to genetics. And then we probably will have an opportunity to speak at the end with answering some of the questions. So here is the screenshot. So I would want request Dr. Baljekar to please go through this and then explain to us as to what's the role of genetics in the future or existing medical practice. Yeah, so thanks, Stan. Now let's divide the medical practice as it is practiced today. What happens when a patient comes to a doctor? First of all, there is a complaint which the patient tells the doctor does a physical examination and takes a history, which means he asks the details about the complaints, then gets a set of tests done, which may involve blood, urine, X-ray, ultrasound, etc., and then decides on a line of treatment based on the clinical examination and the investigations that he has done. That treatment could be medical or it could be a combination of surgery. In one line, what modern medicine is all about is that the patient has already got the illness for a short time or a very long time. And in many cases, they come with the complications of the disease. For example, if a patient is having diabetes for a long time, which is not controlled, he may get gangrene on the toe. So he'll come for the gangrene. And then we find out that this man has been not either knows about his diabetes, doesn't bother about it, or he doesn't know that his blood sugar is 300, 400, and he doesn't know.
So we are seeing at a very, let us say if you have a scale of 0 to 100, we are seeing it in the last quarter, that is 75-80% of the disease has already affected the body, and now 25% only is remaining, and he has come with the complications. Now this is a very bad situation because there is very little we can now do to help him, and most likely he will lose his toe, because as a surgeon I'll have to remove his toe which is already gangrenous, and therefore I'm at a very great disadvantage. Whereas what is now happening, because of our introduction, we decided that the awareness about wellness, the awareness about genetics is increasing even amongst the practitioners, and it is now realized that if you can avoid the disease altogether, then of course that is the best situation to be. So if you were to add to this clinical examination the addition of DNA analysis, it is going to enhance the treatment of the patient. Why? Because suppose you are doing the suppose you are doing the DNA test only for diabetes, you may also discover he has got some cancer genes, or that he has got blood pressure genes, or that he has got some genes which make him prone to addictions. Now, if you do those tests, you can then, forewarned is forearmed. So you can warn the patient that, see, you are having diabetes, but you also have, let us say, BRCA1 gene, which is gives breast cancer in ladies or prostate cancer in males, that you are likely to also have this. Therefore, you must take care about this. So a certain diet, if you follow, or a certain exercise regime will help your diabetes, but along with that, it will also help the, the other disease which is likely to happen because of the DNA makeup. So it is going to only enhance, it is not going to reduce. Therefore, the treatment or the division of the patients would be one, going to a genetic counselor, getting the DNA test done, and generally finding out what are the type of diseases he is likely or she is likely to suffer. That is one part, which is what Stan is doing. And the other part is, even if they come with disease, it will necessary to do the DNA testing so that we can find out other things which are not yet known to the patient or to the doctor. Okay. So it doesn't mean that just because the patient has come as a patient, it is too late to do DNA. No, we could, prevent his cancer, or we could prevent a stroke, or we could prevent autoimmune disease. So the first thing, therefore, जब हम लोग कोविड-19 के टाइम पे बात कर रहे थे कि कोविड-19 ज्यादा उनके लिए असर कर रहा है जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, लाइक डायबिटीज और समथिंग लाइक दैट. And also the genetics. We had a podcast on that also, that what is the role of genetics specifically in COVID. Yes. And there were certain people with the genetic makeup who became more serious in COVID, and others did not. That's why people used to say, why did this guy survive and why this person died? Because apparently healthy young people have also died in COVID. Apparently healthy young people. It's not only those with comorbidities and old age. So inherited disease को डायग्नोज करने में जेनेटिक्स क्या है? हाँ, तो इनहेरिटेड डिसीज मतलब जो जन्म से जो डिसीजेस होते हैं. ओके, तो इसमें वन ऑफ द कॉमनेस्ट आपने देखा रहेगा डाउन सिंड्रोम. जो बच्चे लोग हो उनको ऐसे आंख ऐसे रहते हैं और मुंह ऐसा ऐसा रहता है, थोड़ा कम आईक्यू के बच्चे रहते हैं, उनको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम. तो ये जो डाउन सिंड्रोम है इज वेरी कॉमन एंड इट कैन बी डायग्नोस्ड विथ अ सेल फ्री डीएनए इन द मदर्स ब्लड. सो एक माँ का एक ब्लड टेस्ट किया तो हम बोल सकते हैं कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम होने वाला है. एंड मेन थिंग इज दिस कैन बी डायग्नोस्ड एज अर्ली एज 10th week of pregnancy. ओके, तो दिस जनरली हैपेंस इन consanguineous marriages, मतलब जहां पे हस्बैंड एंड वाइफ आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड दे गेट मैरिड. बहुत सारे कम्युनिटीज में मामा और मतलब मदर्स ब्रदर को मैरिज होता है. मदर्स मीन्स सिस्टर्स ब्रदर इज मैरिड टू सिस्टर्स डॉटर. दिस इज कॉमन प्रैक्टिस इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. दिस इज नोन एज कॉन्सेंग्यूनियस मैरिज. तो व्हेन क्लोज रिलेटिव्स में मैरिज होता है तो उसमें ये डाउन सिंड्रोम वगैरह आने की ज्यादा चांसेस रहते हैं. तो अगर हमको ऐसे मालूम है कि ऐसे सिचुएशन है तो मदर का
10th वीक में ही अगर आपने एक ब्लड टेस्ट किया तो आपको मालूम हो सकता है कि बच्चा डाउन सिंड्रोम से ग्रस्त है या नहीं। अगर है तो उसको फिर अबॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन ऐसे बच्चों को पालना बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, बिकॉज दे आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट। तो उनको बहुत केयर लेना पड़ता है, उनको स्पेशल स्कूल्स में डालना पड़ता है, उनके लिए सब स्पेशल करना पड़ता है, बाद में उनका मैरिज भी करना मुश्किल हो जाता है। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि अगर हो गया तो यू टू लुक आफ्टर, लेकिन अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो डेफिनेटली बेसिकली वी आर टॉकिंग के डायग्नोसिस ऑफ कंजेनाइटल डिसीजेस। दूसरा, हमारे अभी इंडिया में वी आर नोन एज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। 10 करोड़ लोगों से ज्यादा डायबिटीज है लोगों को, 10 करोड़, ओके, एंड ग्रोइंग। और दूसरा एक ट्रेंड क्या हुआ है कि डायबिटीज अभी यंगर एज ग्रुप में आ रहा है, उसको बोलते हैं मोडी, MODY, मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग, राइट। और ये मोडी में दे हैव डेफिनेटली फाउंड a gene which is called ADA, okay, adenosine deaminase, okay. So ADA gene जो है which is on chromosome 20, right, out of the 23 chromosomes, chromosome 20 पे ये जीन रहता है। अगर ये जीन मिला ब्लड टेस्ट में या सलाइवरी टेस्ट में, यू कैन प्रेडिक्ट बच्चों में, अगर आप ये करते हो कि ये जब तक टीनेजर हो जाएगा उसको ये मोडी हो सकता है। एंड मोडी, that is maturity onset diabetes of young, is present in more than 10% of all diabetics। मतलब अगर आप 10 करोड़ पकड़ो तो 1 करोड़ children in the age group of 12 to 14 will be having maturity onset। Now what is the difference? एक है NIDDM, मतलब non insulin dependent diabetes mellitus, which is the common type of what we call age related और ओबेसिटी रिलेटेड, वेट प्रॉब्लम की वजह से डायबिटीज होने वाला। वो जनरली 35, 40, 50 ये एज ग्रुप में होता है, लेकिन अब ये ओवरऑल एज ग्रुप कम हुआ है। और इसमें ये जीन की वजह से क्या होता है कि इनका जो इंसुलिन रिलीज होता है बॉडी में, जब वो खाते हैं तो वो कम इंसुलिन होता है और उसका रेट भी कम होता है, मतलब ये जो रेट से इंसुलिन आना चाहिए। और इसकी वजह से जो पूरा जो ग्लूकोज है वो डाइजेस्ट नहीं होता है और उससे वो ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई रहता है। सो डाउन सिंड्रोम एक मेजर ऑब्जर्वेशन है, हम लोग कर सकते हैं। डायबिटीज और एक है, एंड हाउ अबाउट कैंसर? तो यस, so other than diabetes, which is a lifestyle disease, the next is the very big group, means I would say the two biggest problems today, one is diabetes, other is cancer. So in cancer, we have got certain definite genes which are for definite organ cancers. अब ये breast cancer gene 1 and breast cancer gene 2, ये दो बहुत commonly tested genes हैं, and अगर ये दोनों present हैं तो up to 60% chance of having breast cancer, okay? और ये अगर मेल्स में दिखते हैं तो इसमें क्या होता है कि जीन सब में रहता है, लेकिन इसमें एबनॉर्मल वैरायटी ऑफ जीन्स आता है, एबनॉर्मल टाइप ऑफ जीन ऑफ BRCA, एंड दिस मतलब म्यूटेशन एक एबनॉर्मल होता है, विच कैन बी टेस्टेड इन अ टेस्ट। यू कैन सी whether the BRCA जीन इज नॉर्मल, दैट मीन नेगेटिव फॉर म्यूटेशन, और पॉजिटिव फॉर म्यूटेशन। अगर पॉजिटिव है तो इट इंडिकेट्स इन लेडीज ब्रेस्ट कैंसर, इन मेल्स प्रोस्टेट कैंसर, पैंक्रेटिक कैंसर and ovarian cancer. Now, breast, ovarian and prostate cancer is as high as 40, 50, 60%, whereas pancreatic is much less. It is around 5%. Then there are other genes like these I've listed here: BER, ABL for blood cancer, this NMYC, EGFR, and all these. These are the names of the genes which specifically indicate lung cancer and colon cancer. So, most of the common cancers, the commonest cancers we see today: breast cancer in ladies, ovarian cancer and uterine cancer in females, prostate cancer in males, colon cancer in both males and females, especially in the West. And now it is increasing in India also. So through a genetic testing आप ये सभी डायग्नोस कर सकते हैं। हाँ, सलाइवा का सैंपल या ब्लड के सैंपल में अगर आप इसको, जैसे हम नॉर्मली करते हैं ना, हमारा ब्लड शुगर करते हैं, हमारा लिपिड प्रोफाइल करते हैं, हमारा क्रिएटिनिन करते हैं, देखने के लिए हमारा किडनी ठीक है, लिवर ठीक है, हर साल को हम लोग एक टाइम तो करते हैं, है ना, जस्ट टू सी के ऑल एवरीथिंग इज ओके।
वैसे ही ये कर सकते हैं, और ये हर साल करने की जरूरत नहीं है. दिस इज वन टाइम, दिस इज लाइक अ ब्लूप्रिंट. आपका ब्लूप्रिंट है, वो तो चेंज नहीं होने वाला है. ब्लड शुगर आपका ऊपर नीचे हो सकता है, आपका लिपिड्स ऊपर नीचे हो सकता है, आपका डीएनए नहीं चेंज हो सकता है. तो ये एक बार करेंगे तो भी बस है. एग्जैक्टली. सो गोइंग फॉरवर्ड, अभी ये सब डिसीज आने के पहले आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स हम Yes. लोग ले सकते हैं. So that is the domain of what velocity genetics is doing. They are heavily into nutrigenomics. अब nutrigenomics का मतलब क्या है? Nutrigenomics का मतलब है epigenetics and other things related to it. और epigenetics का मतलब क्या है? Basically epigenetics means the theory is कि अगर आपके डीएनए में एक खराब जीन, उसको बोलते हैं रोग जीन है, जिसकी वजह से कोई भी बीमारी हो सकती है, लेकिन उसको ट्रिगर होने के लिए कोई तो निमित्त चाहिए. There has to be a nimitt, there has to be a reason, which is in the environment, either in your body or in your immediate environment, in your family, or in your external environment where you stay. So, what is the immediate environment? Is your diet and your exercise. What is in your environment? Virus infections like it's hepatitis virus or Epstein-Barr virus for lymphoma and so on. Certain this human papilloma virus, which is nowadays being promoted, herpes virus. All these viruses have, for example, this herpes virus has leads to cancer of the cervix, and this HCV and hepatitis B virus can lead to liver cancer. And toxins in general means it could be two types. If you smoke or you take alcohol, that is toxins, which is habits, and toxins in the air. That means, like for example, in Delhi, they are saying that the air quality is so poor that it can directly cause problems like lung cancer. It's like if you breathe in very polluted air, it's like smoking 100 cigarettes a day. So it can lead to these things. So this epigenetics is something which is very, very, again, very much strongly related to the DNA test. Because once you do the DNA test and you know what is the person prone to, you can tailor the diet, you can tailor his exercise, and of course try to ask him or her to take certain precautions, like he should not smoke, he should not take alcohol, he should have a clean, as much as possible, clean air, and so on. Yes. The second is method to prevent occurrence of disease. Now, again, after epigenetics, as we already discussed, you can give him a specified diet. For example, one of the seminars in what Stan had, I met a patient who said that as a diabetic, he was being given the standard diet which every doctor who treats diabetes says, that take less sweets, take less glucose, take more proteins and exercise. These are words, but it doesn't tell you what to do. Now, in this patient, despite following the doctor's advice and taking the medicines, he was not able to control his diabetes. Then he got his DNA testing done. And on the DNA profile, it was found that this man was actually getting his blood sugar was not coming down because he was taking a high fiber diet. Now, normally, a high fiber diet, that means more green vegetables and all, it reduces the sudden surge of glucose which happens after eating food. It takes more time for the glucose to increase. But in this particular fellow, because of his DNA makeups, actually the fiber was causing the blood sugar to not fall. And when he changed to a low fiber diet, immediately his blood sugar came down. So sometimes the DNA analysis can actually tailor make, you can pinpoint focus on what that individual patient needs. It's like homeopathy. Homeopathy has a theory. For example, in allopathy, fever is treated with paracetamol. But in homeopathy, suppose a person comes with fever, they will find out his whole history, the history of his grandfather, what habits, what he likes, etc., and give him different medicines for the same symptom. So two people with fever will not get the same medicine in homeopathy. The medicine is tailor-made to the overall morphology of that person, physiology of that person, his physiology. Similarly, when you do DNA testing, the diet and the exercise is targeted as per the DNA test to that patient, which is very, very different approach from a one-fits-all approach of modern medicine.
Modern medicines is more protocol based. If you have fever, give paracetamol. If paracetamol doesn't work, give something else. If that doesn't work, do something else. It's like stepwise, 1, 2, 3, 4, like this. It is more like, based like a flow chart. But it doesn't say that two people with fever will get two different medicines. No, same medicine will be given. So, but in DNA testing, you will have to take care to give the recommendations of diet and exercise, which are very important for any lifestyle disease, whether it's blood pressure, whether it's diabetes, even if you want to prevent cancer. Obviously, if you smoke, you're more likely to get lung cancer. If you don't smoke, you will not get lung cancer, right? It's like that. So, other Alright, things are also important. so Then there is one more part in this, Yeah. in preventive medicine, which is pharmacogenomics. Now, this is Yes. still a baby science, but basically what it is it is a study of what the effect genes have on the absorption, distribution, and metabolism of drugs. Now, I'll give you an example. Metformin is a very commonly used drug. Okay, glyciphage is the name. This is one of the commonest drug used in maximum diabetics. Now, what was found is that when you give one tablet of 500 milligrams metformin, what is the amount that is absorbed from the stomach into the blood? How long does the metformin remain in a concentration to have its effect? And ultimately, then it is excreted through the urine. This entire thing is studied, right? And that is how you give a dose, 12, one tablet, twice a day or 3 times a day, depending on how quickly the blood level comes down. Now, metformin has a one property, which is accumulation. It accumulates in the body. Hence, when you stop metformin, immediately effect will not come down. It will take 1 or 2 days because the metformin goes and stays in the fat in the body, and it is getting released slowly. So, even if you stop metformin today, its effect will remain for 1 or 2 days before all the metformin is excreted from the body. Now, what they found is that people with certain genes or certain genetic makeup, they were slow metabolizers of metformin. Means, if one tablet, if you have to give twice a day, in that person, you'll have to give one tablet only once a day, because the metformin is remaining in the blood at a higher level for a longer time in that person compared to other people. Now, this is the heart of pharmacogenomics, and it therefore is necessary for us to do the DNA test in future to see that we do not overdose the people or underdose the people. So this is going to be a very important part of normal medical practice. So a set of genetic testing will have to be done, and your prescription, means the doctor's prescription will have to be rationalized with the DNA testing. So pharmacogenomics is going to come up. Right now, they have done testing for common drugs, especially those drugs which you have to take lifelong, like drugs for blood pressure, drugs for diabetes, or drugs for cancer. In future, they will also do for other drugs like antibiotics and things like that. Okay. So the idea is, if you give the correct dose, side effects because of the medicine will be less, and it will be more effective. एब्सोल्युटली, जैसे हम सभी लोगों का खाना अलग अलग है, सेम दवाइयां भी हर एक के लिए काम नहीं करता है, वो भी फार्माकोजेनोमिक्स के जरिए. एंड देन आई थिंक आई नीड टू मेंशन द इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट जो अभी अभी कंप्लीट हुआ. एंड वन ऑफ द मेजर रीजन व्हाई द गवर्नमेंट हैज अंडरटेकन दिस इज कि इसके जरिए हमको भारत में जो अलग अलग एथनिसिटीज हैं, समुदाय हैं, जाति वर्ग हैं, उनके जेनेटिक मैपिंग के बारे में पता चले, और वही हिसाब से फार्मा कंपनीज इंडिया के लोगों के लिए इफेक्टिव मेडिसिन को तैयार कर सके. So now there is also the other role of preventive medicine, which is to detect, which you already said, susceptibility to lifestyle disease. But here I want to say one important thing. We have already discussed diabetes, blood pressure, and cholesterol and all these things. But addictions. Now, one of the major problems in states like Punjab, and even in our own state, in the city of Bombay and things like that, there are a lot of people who are taking to drugs. Now, if you are going to have any de-addiction center, okay, I think in future it will have to be along with a DNA testing, because DNA testing or gene mapping is able to identify those people who are more susceptible to become addicts. Now, this has been known for a long time that alcohol addiction has a genetic bias, in the sense कि कोई जो होता है, अब वो
एक 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 पेग भी पिया तो उसको पूरा बोतल पीना पड़ता है, एंड देन वो छोड़ नहीं सकता है, बिकॉज हिज बॉडी एंड हिज माइंड, बिकॉज ऑफ हिज जेनेटिक मेकअप, ही इज प्रोन टू एडिक्शन. तो अगर ऐसे आदमी ने कभी भी दारू पिया तो वो अल्कोहलिक बन सकता है. अगर सिगरेट पिया तो वो सीधा एक एक पैकेट खत्म कर देगा. अगर वो ड्रग्स लिया तो ड्रग एडिक्टिव हो जाएगा. वो रोक नहीं सकते अपने को. अगर ये टेस्ट करेंगे और अगर आपको मालूम है कि आपका जेनेटिक मेकअप इज टुवर्ड्स एडिक्शन, बेस्ट इज टू अवॉइड स्मोकिंग, ड्रग्स एंड अल्कोहल. इवन एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करना चाहिए. एक बार भी अगर आप करेंगे तो चांसेस आर आप एडिक्ट बन जाएंगे. तो जहां पे एडिक्ट्स ऑलरेडी है, ऑब्वियसली वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ देम वुड हैव दिस एडिक्शन का ससेप्टिबिलिटी. तो उनका जीन टेस्टिंग करके इट शुड बी now it will probably become compulsory to do this with along with psychiatric counseling, psychological counseling and de-addiction. Other things you already discussed, so I will not go into that. Yeah, one area जो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, that is कि जैसे हमारे टेक्नोलॉजी में एआई आ गया है, मशीन लर्निंग आ गया है, चैट जीपीटी है, तो वैसे ही जेनेटिक्स की एआई मैं बोल सकता हूं कि इस क्रिस्पर, तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के बारे में आप थोड़ा एनलाइटन करें. हाँ, तो अभी हमने अब तक डायग्नोसिस और प्रिवेंशन बात किया, अभी हम ट्रीटमेंट में आ रहे हो. ट्रीटमेंट के रोल में क्या होने वाला है? अब ये क्रिस्पर करके अराउंड 2019-20 में वन लेडी साइंटिस्ट फ्रॉम यूएसए, शी इज एक्चुअली यूरोपियन origin but she did the research in USA and she was given the Nobel Prize in chemistry. तो she discovered certain enzymes में जो लाइक फॉर एग्जांपल हमारा जो दूध दही बन जाता है वो एक एंजाइम है, वैसे एंजाइम्स रहता है. तो ये एंजाइम्स का क्या है कि वो कॉम्प्लेक्स केमिकल्स रहते हैं जो ब्रेकअप अदर केमिकल्स. तो उन्होंने एक एंजाइम बेस्ड कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन्वेंट किया जिससे वो क्रोमोसोम्स को कट कर सकती है. ओके, इट कट्स ऑफ द क्रोमोसोम. सो और इसका फुल फॉर्म इज क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स. मतलब what it does basically, how it acts, उसका वो फुल फॉर्म है. CRISPR is वो what it actually does, it basically cuts the chromosomes. तो if you are able to identify the rogue gene, that means जो जीन डिसीज करने वाला है उसको आप एंजाइम्स देके कट कर सकते हैं या उसको निकम्मा कर सकते हैं. यू कैन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय दैट जीन सो दैट उसकी वजह से जो डिजीज आने वाला है बच्चे में वो आएगा ही नहीं. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां पे एक डेफिनेट डीएनए पे डेफिनेट जो रोग जीन है उसको आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो विदाउट टचिंग द अदर जीन्स. सो इट इज अ फोकस्ड ट्रीटमेंट एट द लेवल ऑफ द डीएनए. दैट इज वन. द सेकेंड थिंग इज दैट if you want to treat an existing disease, that means अगर ऑलरेडी डिसीज है तो भी आप उसमें some people, अभी कैंसर हो गया तो दे इमीडिएटली गो टू स्टेज 4. अब स्टेज 4 में क्या होता है कि अभी आपको क्या कीमोथेरेपी देते हैं, रेडिएशन देते हैं, देयर आर लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स. लेकिन अगर आप जेनेटिक लेवल पे जाके उसके जो कैंसर सेल्स है उसके अगेंस्ट अगर आप एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब जो इनहेरेंट जो उसका जो इम्यून सिस्टम है उसको स्टिम्युलेट करने के लिए जो क्रोमोसोम्स या जीन्स चाहिए, अगर वो आप दे सकते हैं तो वो बॉडी से ही उसका एंटीबॉडीज तैयार हो जाएगा. जैसे हम कोविड में वैक्सीनेशन देने के बाद एंटीबॉडीज तैयार होके कोविड का वायरस को हम लोग नष्ट कर रहे थे, सिमिलरली इसमें वही इफेक्ट आने वाला है कि आप क्रिस्पर के थ्रू, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के थ्रू आप ऐसे कुछ इम्यून एंटीबॉडीज तैयार कर सकते हैं जो कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं. तो इसका जो इफेक्ट है इतना साइड इफेक्ट नहीं रहेगा जितना कीमोथेरेपी है. अब कीमोथेरेपी में क्या होता है, वो सभी सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, इसीलिए बाल जाते हैं. तो जहां पे भी फास्ट ग्रोइंग सेल्स है, बाल है, स्किन है, ब्लैडर है, जहां पे मोर टर्नओवर, ब्लड है, बोन मैरो है, तो जहां पे मोर टर्नओवर ऑफ सेल, बिकॉज कैंसर में सेल्स ग्रो रैपिडली, तो it goes and attacks all the areas where cells are growing rapidly. So it destroys the cancer. Along with that, it destroys other things also, like the hair loss is there, anemia is there, and so on. These side effects will not be there with CRISPR therapy. Exactly. So एक एडवांस टेक्नोलॉजी एंड बहुत जल्दी है इंडिया में भी अवेलेबल रहेगा. तो अगर एक छोटा सा कंक्लूजन हम लोग देखेंगे
कि जेनेटिक्स के अलग अलग डिसीजेस आते हैं, तो उसके लिए और क्या क्या इनोवेशंस आ रहे हैं, एंड वेयर द हेल्थ केयर इंडस्ट्री इज सो लुकिंग इनटू। अभी इसमें एक थोड़ा एथिकल या मॉरली क्वेश्चनेबल पार्ट है। जो दो चीज है इसमें, एक है डिजाइनर बेबीज एंड दूसरा है ऑर्गन ट्रांसप्लांट। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप सब कुछ ऑल्टर कर सकते हो क्रिस्पर के थ्रू, देन आपके पास एक मेनू कार्ड आएगा। आपको बच्चे को ब्लॉन्ड हेयर चाहिए, रेड हेयर चाहिए, व्हाइट हेयर चाहिए, ब्लैक हेयर चाहिए, आईज ब्लू चाहिए, ब्राउन चाहिए, आपका बच्चे का आईक्यू क्या होना चाहिए, उसका बिल्ड क्या होना चाहिए, उसका हाइट क्या होना चाहिए, आप चूज कर सकेंगे। लेकिन इज दिस शुड दिस बी अलाउड? बिकॉज इसमें थोड़ा रेसिज्म का इफेक्ट आ जाता है। जैसे हम वो क्या बोलते हैं, कौन सा क्रीम है वो, व्हाइट स्किन फेयर फेयर एंड लवली जैसा क्रीम को, जैसा क्रिटिसिज्म होता है कि व्हाई आर यू वांटिंग टू चेंज द कलर फ्रॉम डार्क टू व्हाइट। Same thing is applicable to designer babies, but designer babies will come in the near future. In most of the people who are today 25 and 30 in their lifetime, in the next quarter of century, this will become very regular for people to order the baby the way they want. High IQ, low IQ, moderate IQ, good build, low build, etc., etc. Second thing is using the CRISPR and the even stem cell technology. It would be possible to take the genes from a person's blood and grow organs. But this will be very expensive. So only the rich will initially benefit from this. Yes. So whether it should be allowed. But going forward, I can see a huge this of replacement. So the longevity of people living will probably easily cross 100. Because if your heart becomes weak, you can remove the heart and put a new heart, and there's no chance of rejection. अभी ट्रांसप्लांट में क्या होता है, किसी को मरना चाहिए तो वो हार्ट आपको आएगा। इसमें किसी को मरने की जरूरत नहीं है। You can grow the heart in a laboratory with the help of the genes from the person and then implant it. Or you can grow kidney, or you can grow liver. So with this technology, longevity, that means कितने दिन आप जी सकते हैं, वो बढ़ेगा। ये आम होके आम आदमी को पहुंचने को बहुत टाइम लग सकता है। तो अगेन उसमें ये मॉरल क्वेश्चन आता है कि why only some people should be allowed to live longer and not others, right? So then treatment of genetic diseases तो हमने बात किया। Treating later stages of cancer. So as I said that when today what happens, if this stage 4 they tell you कि आप 6 महीना जीने वाले हैं, 1 साल जीने वाले हैं, वो सब नहीं रहेगा। Even in later stages of cancer, by altering the oncogenes and stimulating the antibodies in the body to target it against the cancer, that particular cancer, you will be able to even get rid of this cancer which is spread to the whole body, so that the treatment will be more efficient with less side effects and with greater success. So even treating stage 4 cancer, and then there are certain diseases which are called autoimmune disease. Autoimmune मतलब क्या, कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इट इज फॉर आवर ओन प्रोटेक्शन। लेकिन अगर वही इम्यून सिस्टम हमारे अगेंस्ट गया तो क्या कर सकते हैं, वो बहुत ही तकलीफ देता है। और ये जो डिसीजेज है, they affect the entire body. Thyroid, it affects the pancreas, it can affect the lungs, it can affect the skin, it can affect the blood, it can affect bone marrow. So autoimmune diseases आज की दुनिया में, मतलब आज only few anti-cancer drugs and steroids. These are the only 2 treatments available for autoimmune disease. But going forward, autoimmune diseases, because they are based on genes, by altering the genes, you will be able to treat autoimmune disease. So 2 important type of this. One is diabetes, other lifestyle diseases, late stages of cancer, and difficult to treat conditions like autoimmune disease. All these will definitely be more amenable to treatment. And of course, when it becomes common, the cost also is going to come down. बिल्कुल, आपने एक बहुत बड़ी बात कही डॉक्टर साहब, एंड दैट इज कि अभी जो 20-25 इयर्स के एज के जो व्यक्ति हैं, अगर वो वेबिनार में हैं या इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे आगे जाके, उनको एक ऐसी उम्मीद है कि इन द नेक्स्ट 20-25 इयर्स में से डिजाइनर बेबीज भी काफी कॉमन हो जाएंगी, और लॉन्जिविटी यानी कि 100 साल जीने का भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ेंगी बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए सब लोगों को तब तक अपना लाइफस्टाइल को, अपने खाने पीने को, न्यूट्रिशन को थोड़ा संभालना जरूरी है। हम लोग थोड़ा कंक्लूजन करते हैं डॉक्टर साहब। सो अभी तक हम लोगों ने जो भी बात किया,
तो उसका अगर हम लोग एक कंक्लूजन करेंगे, तो दिस इज हाउ द समरी इज. So basically, abhi gene therapy is not available as a mainstream, but it will become a part of mainstream medical practice. Matlab both prevention, diagnosis, and treatment. Okay, which have no, and some of these illnesses do not have a proper treatment today. That will become very common to treat stage 4 cancer, transplant organs. That will become very common. So it is going to enter into the mainstream of medical. It could even be as early as 10 years. I'm not even saying 25 years. This could even be in the next 5 to 10 years because it's already started in foreign countries. Absolutely. So second is that designer babies aayenge. Yes, it can lead to designer babies again and fuel organ transplant. So growing the organs in the laboratory and then transplanting them, or even if you do transplant, it might even be xenotransplant. That means pick ka liver isme dalo and then alter the immune system with the help of the genes so that it accepts that kidney. So even animals' organs could probably be finding a way to, put in this. So you don't have to wait for a person to die to get an organ. Absolutely. And of course, this will definitely fuel a huge career in DNA testing and gene counseling. So just like we have psychological counselors today, though they are not doctors, they have done MA in psychology or MSc in psychology or something like that. Like that, genetic counseling as a branch of art, not branch of science, will probably come up. You don't have to be a doctor to be a genetic counselor. Like you are a psychology or a wellness doctor or something like that. You don't have to be a medical doctor for that. You can be from some other field, but you have an intense training in genes and counseling for genes, because unless and until a counselor is there to find out and interpret the DNA report and then tell you whether it is diet, whether it is exercise, or whether which specialist to go and get your treatment done, and what is being treated and what needs to be treated, that interpretation of the report is very critical for, he's like a bridge between the specialist and the doctor and the patient. The patient with the DNA report, and this is the specialist. So the counselor is the bridge in between. He will see, okay, this one goes to a cancer doctor, this one goes to this one goes to this, and so on. So I think it's really fantastic, Dr. Nikhil Baljekar. तो जो जेनेटिक की दुनिया में बहुत सारे अनोखे इनोवेशंस आने वाले हैं, तो उसमें से I think we touched upon only a few. There are so many other innovations. Yeah, there are a lot, but the most I would say the most dramatic one has been CRISPR. Absolutely. And the pharmacogenomics, because that definitely is going to enter into the normal practice of most doctors. They'll have to have a genetic basis for writing a prescription. Amazing, really true. So I want कि जितने भी लोग participate कर रहे हैं and you're listening to us, you can give your feedback. और अगर आपको कुछ specific questions हैं, या सबको benefit देने वाले कुछ questions हैं, you can ask. Any question is okay, Stan. Let whatever their doubts, and whether it's in Hindi, English, it doesn't matter. Anybody किसी को कुछ भी पूछना है जो topics के ऊपर, feel free to ask in English or Hindi or Marathi. I'm okay in all three languages. Okay, so I'll wait for our questions, but before we conclude question and answer होने के बाद में, I'll have a couple of announcements to make. So please stay back. So अगर किसी के कुछ भी questions हैं, so Manisha Yadav says that it's great and wondering कि आगे क्या-क्या मतलब कुछ भी हो सकता है. For example, artificial intelligence के ऊपर भी जो chat GPT वगैरह में जो जितना data available है, तो उसके बारे में कि the heads of different countries have come together and बोलता है थोड़ा slow down करो, because there are copyright issues, there are too much of an information available and misuse also. Yes. So बहुत सारे Google Baba is now getting everybody becomes half a doctor without any diagnosis या expert opinion के बदले. So that also advantages भी है, उसके disadvantages भी बहुत ज़्यादा हैं. So Krupa is saying wonderful knowing about the studies and looking forward to healthier world. Yes, हम सभी लोगों के लिए जिम्मेदारी है ये करना. Mishri Modi is asking, she's a postgraduate student with us. I'm curious to know how lowering fiber in the diet reduce the glucose levels in the patient. So doctor ने already बता दिया. I'm sure he'll talk about it. His genetic makeup was not allowing that.
When he got his DNA tested, certain genes were identified which said that it's better that he has a low fiber diet, not a high fiber diet, which is normally recommended in diabetics. And then his Yes. blood sugar dropped. Yeah. So fiber intake is beneficial to diabetes is a very generic statement, and usme again there are variations. There are people who will respond positively also to it, majority of them. लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको ज्यादा फाइबर इंटेक होने से शुगर बढ़ने के भी जीन्स होते हैं या वो सिम्टम्स होते हैं. Abha Chandra is asking this question: what are the chances of, sir, that those bad genes will not express after prevention? आपके पास रोग जीन्स हैं, बैड जीन्स हैं, आपने प्रिवेंशन के लिए पूरा मेहनत किया, कोई गारंटी है? It's not like that. It's not like that. See, there is a rogue gene, as we said. There is a gene, but it is like a seed. Let us say, I'll give you a simple example. You have got a seed, right? You put it in the plant, all right? Put it in a pot, but you don't put water. You don't give sunlight. Will that seed germinate and become a plant? No. So epigenetics is what? Is giving enough sunlight, giving water, so that the seed becomes a plant. Similarly, when a rogue gene is there on the chromosome, it is like a seed. It will only manifest into disease if the epigenetics, that is the surrounding area of that gene, is conducive for that rogue gene to manifest into disease. So what is that? We already discussed. It could be environment, it could be habits, it could be diet, it could be exercise. Now, where does the role of genetic testing come? Genetic testing will then tell you that this is the rogue gene in your body. You are prone to, let us say, diabetes. If you are prone to diabetes, what is the logical conclusion? You must see that you are active and you must take limited calorie intake. That is two important things. If you exercise, any kind of exercise, you may go running, swimming, walking, all right, whatever suits you as per your age and etc. But if you take an exercise of a certain type and a diet of certain type, that gene which is responsible for manifesting diabetes will not manifest at all. So that is the important. Now, if you have CRISPR at your disposal, you can destroy that particular gene without touching any other gene on the chromosome. It's a targeted genetic therapy. It's like a sniper who's hitting a target at 500 meters, and it hits the bullseye. Without touching anywhere else, it goes and hits the bullseye. CRISPR works the same way. It goes and hits that particular gene on that particular chromosome and destroys it so that it cannot manifest. So that's a treatment. And what we are talking right now is prevention. We are not allowing the epigenetics to allow that gene to manifest into disease. That is one part. But if you have CRISPR, you can destroy that gene. And that is the future. Once you do the DNA testing and you identify a rogue gene, let us say, which is responsible for cancer, you destroy it before the cancer comes. So that itself will increase the age. No. If you know that you are going to get a heart attack and you destroy the gene which is responsible for the heart attack will never come. Heart disease will never come. Cancer will never come. Diabetes will never come. So that itself will increase the length of this. Usme bhi agar suppose organs due to age, only because of aging they start failing, you also have access to transplanting the organs, which are now what happens, only if a person dies, his organs can be harvested and given to another patient. But that is a big limitation. You have to wait for somebody to die to take their organs. If you can grow the organ and tailor-made to your genetic makeup, there is no question of rejection. 100% it will remain because it's a part of you only. Yeah, so एक और सवाल है, SM Studios ने पूछा है, did new sport person and other celebrities have been doing this long before we all know? Common man को पता चलने के पहले ही हो सकता है कि स्पोर्ट्स पर्सन या सेलिब्रिटी शायद वे करते रहेंगे. No, they are doing it. I don't know about, but the cricketers are being done. Their genetic analysis is being done in detail, and each cricketer, depending on his weight, his muscle mass, his height, and his role in the team, whether it's a fast bowler, whether it's a spinner, whether it's an opening batsman, whether it's a middle order batsman, whether it's a wicket keeper. Yeah, reflexes. They are given specific diet. And that diet has to be continued even when they are not playing, that is at home. They're also given a specific set of exercises, which exercise different groups of muscles. And some are general exercises, but as per as the role. For example, a fast bowler needs very strong shoulders and back muscles.
whereas a batsman needs very strong forearms and wrists. Okay, a spinner needs a very strong wrist. A badminton player needs more wrist. A tennis player needs forearm. He doesn't play with the wrist. The forearm is steady. I mean, the whole forearm is used to hit the ball in tennis, but in badminton and table tennis, it is wrist. So, depending on the role of the cricketer, depending on his body status, and of course the DNA status, it is being done. Definitely, it is being done. All international athletes competing at the highest level have a very strong team with a doctor, nutritionist, physiotherapist, and also backed by a genetic counselor. Yeah, I think, you know, in other words, I think you beautifully explained that कि कोई भी फील्ड में अगर आपको एक्सेलेंस पाना है तो आपका पावर को फुल्ली पोटेंशियल आपको अनलीश करना है, तो देन डीएनए टेस्टिंग कैन टेल यू एंड देन इट कैन गिव यू दैट इनसाइट वेदर यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन or whether you are into different professions. So there's one more question and that will be the last question that we'll take. उसके बाद में मैं कुछ announcement करूंगा. क्या डीएनए टेस्टिंग से इनफर्टिलिटी इश्यूज को भी हम लोग एड्रेस कर सकते हैं? Of course. Yes, because see, infertility, there are two parts. One is the male factor and the other is the female factor, or it is known as unknown infertility, where both male and female are normal, but still they're not getting a child. All right. So if it is a male factor, it's generally lower sperm count or abnormal sperms. And in case of females, it is either the ovaries, like polycystic ovarian disease, where the ovums are not coming properly, or there's a tubal block. Many of these things can be corrected by surgery, especially in the females. But what is causing this, the illnesses that lead to this, the tubes being blocked, which there's a condition called endometriosis, which is common, especially in South India. A lot of endometriosis, especially in the state of Kerala, there's very high incidence of endometriosis. Endometriosis means the inner lining of the uterus, which sheds blood every month, that spills into the through the tubes into the rest of the abdomen. All right, and wherever it makes nodules, it causes blockages. So endometriosis can be avoided with certain, I mean, it's based on genes. So therefore, if the rogue gene is treated, then endometriosis will not come. And obviously, if a person has got azoospermia, it is because the testes are affected in childhood, or there is a genetic makeup with the hormonal levels being low, or the spermatogenesis, that means the process where the testes make sperms, are not normal. And therefore, again, see, everything is based on genes. Whatever you are because of your DNA. And therefore, any illness, as long as you can identify the causative gene, and you can then now, with CRISPR, you are able to edit it or treat it and so on. So if there's an offending gene there, it can definitely be treated. Right now, we only do things which we can do. We cannot go at the molecular level or at the DNA level and treat, because that is not available to us. Fantastic. But so it's probably not going to help much with diet and exercise. Infertility will not change with diet and exercise. It will need a targeted genetic therapy. Correct. So thank you so much, Dr. Nikhil. आपके वास्ट एक्सपीरियंस के जरिए आपने बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर हमको डिटेल में बता दिया. Thank you so much. I'd like to thank you on behalf of each and everyone here. And I think it's been really exciting. जो PowerPoint presentation के जरिए जो आपने जो इनोवेशंस, जो एरियाज हैं, जो जेनेटिक्स के फील्ड में जो मेन स्ट्रीम मेडिकल दुनिया में आने वाले हैं, ऑलरेडी वेस्टर्न वर्ल्ड में आए हुए हैं, और इंडिया में बहुत मतलब 3-4-5 साल के अंदर अंदर ही ये चीजें आ सकती हैं. सो इफ वी कैन होल्ड ऑन टू आवर हेल्थ, अच्छी लाइफस्टाइल और अच्छा ख्याल हम लोग रखेंगे अपने आप का, सो वी कैन बेनिफिट फ्रॉम ऑल दिस. सो ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबॉडी, I'd like to really thank you. So let's all thank Dr. Nikhil Baljekar. So you can just put all your comments in the chat box. Dr. Nikhil can read that as well, and I will also let him do this. So सभी लोग मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना फीलिंग्स, अपना फीडबैक इस चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा. सो स्क्रीन में आप देख सकते हैं. I'll take a couple of minutes more to explain कि हम क्या कर रहे हैं.
ओके, सो या ऑल राइट। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक जीपीएस। जीपीएस क्या करता है कि आपको जहां जो डेस्टिनेशन में जाना है उसको जाने के लिए आपको अलग अलग तरीके से मदद करता है, वेदर इट इज द टाइम, कितना ड्यूरेशन लगने वाला है, लेफ्ट राइट कहाँ पे जाना है, सर्विस रोड लेना है और राउंड अबाउट लेना है, एवरीथिंग कंजेशन है क्या नहीं है, ये सब कुछ एक जीपीएस बता देता है। जस्ट इमेजिन कि एक जेनेटिक टेस्टिंग या डीएनए टेस्टिंग एग्जैक्टली वर्क्स लाइक अ जीपीएस ऑफ आवर लाइफ। वो एक छोटा डिस्टेंस के लिए नहीं, कि पूरे लाइफ के लिए एक जीपीएस दे देता है कि आपको क्या खाना खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या अवॉइड कर देना चाहिए, कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए और कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, आपका सर्कैडियन रिदम क्या है, इसके बारे में सब कुछ बताता है। एंड दैट इज द रीजन वेलोसिटी जेनेटिक्स हैज दिस वेलोसिटी जेनेटिक्स एडवांस डीएनए टेस्टिंग प्रोग्राम, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो यूएसए में हुआ था उसका एक मैनिफेस्टेशन है, उससे इंस्पायर्ड है। सो वी डू दिस इन वेलोसिटी जेनेटिक्स एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू मे हैव डन इट। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि नियरली अराउंड 225 टेस्ट हम लोग कर रहे हैं अलग अलग एरियाज में, वेदर इट इज डाइटरी रेस्पॉन्स, योर एडिक्शंस, योर डाइजेस्टिव हेल्थ, योर स्लीप पैटर्न, योर ऑर्गन हेल्थ। 62 डिफरेंट ऑर्गन हेल्थ के बारे में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। And there are so many other parameters. I don't want to read out everything. You can take a screenshot if you want to. या आपको हम लोग ये ब्रोशर भी दे देंगे। योर फिटनेस प्रोफाइल भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो एडवांस डीएनए टेस्टिंग प्रोग्राम का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी क्या है, आपको एक किट परचेस करना पड़ेगा। ये हमारे एफिलिएट्स हैं फिट भारत और वेलोसिटी जेनेटिक्स के जो हेल्थ कोचेस हैं या जिन्होंने सीसीएनजी सर्टिफिकेट कोर्स इन न्यूट्रिजेनोमिक्स का किया हुआ है, तो दे कैन डू इट एंड आई एम श्योर सम ऑफ यू आर डूइंग इट इन द नेक्स्ट वीक जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। डीएनए किट हम लोग ऑल ओवर इंडिया में बेचते हैं बाय कोरियर, स्पीड पोस्ट। एंड आपको एक वीडियो देखना है तो आपका सैंपल जो है आप घर बैठे देख सकते हैं, दे सकते हैं। यू डोंट हैव टू गो टू अ हॉस्पिटल और अ लैब। आप अपना सलाइवा सैंपल आपको देना है, नॉन इन्वेसिव है, कोई फ्लेबोटोमिस्ट की या ब्लड निकालने के लिए जो आपके घर पे आते हैं उनकी जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। 10 अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस में वीडियोस हैं एंड ये आपको मुंबई ऑफिस में हमारा भेजना पड़ेगा। ये भेजने के बाद में हम लोग आपको एक 150 पेज का डीएनए रिपोर्ट दे देंगे। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम रिपोर्ट, आपको ये बार बार करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद में आपका अभी का लाइफस्टाइल क्या है, कि आप क्या डाइट फॉलो करते हैं, आपके कभी उठते हैं कभी सो जाते हैं, क्या आपका प्रोफेशन है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। और ये दोनों को साथ में डाल के आपको मिलेगा जेनेटिक काउंसलिंग विच इज ऑलमोस्ट 1 आवर एंड प्लस। और उसके बाद में देन विल गिव यू अ सॉल्यूशन, ट्रीटमेंट एक तरीके से। इट्स लाइक अ थेरेपी, जीन बेस्ड थेरेपी, जीन बेस्ड वेलनेस थेरेपी। यहाँ पे आप लोग आपको मेडिसिन या कोई सर्जरी वगैरह रेकमेंड नहीं करेंगे, फॉर दैट यू नीड टू गो बैक टू योर डॉक्टर। बट यहाँ पर आपको वेलनेस, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज एंड एपिजेनेटिक्स के बारे में जो बात किया वो आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। एंड ये सॉल्यूशन जब आप फॉलो करते हैं यू विल गेट वंडरफुल रिजल्ट्स। एंड अगले 12 महीने तक यू कैन गेट योर कंसल्टेशन फ्री विद आवर जेनेटिक काउंसलर्स थ्रू द वेलनेस हेल्प डेस्क असिस्टेंस। और ये इसके बाद में आपने जो जेनेटिक टेस्टिंग किया उसका जीन बैंकिंग फैसिलिटीज भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं फॉर द नेक्स्ट 6 years। तो वो हमारा डेटा हमारे पास रहता है एंड देन यू कैन आल्सो लेटर अपग्रेड। सो दिस वे यू कैन एंजॉय अ जेनोमिक वेलनेस, मतलब जीन बेस्ड, जीन आधारित एक लाइफस्टाइल आप जी सकते हैं, जिससे आपको एग्जैक्टली क्या फूड, क्या एक्सरसाइज, क्या लाइफस्टाइल आपको फॉलो करना है, ये आपको इंसाइट्स मिलेंगे। सो दिस इज अ प्रोग्राम। अगर आप में से किसी ने भी जेनेटिक टेस्टिंग अब तक नहीं किया हुआ है तो एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं यू कैन लीव योर मोबाइल नंबर एंड आपको या हमारा टीम आपको कॉल करेगा। एंड थैंक यू दर्शिका, यू जस्ट डन इट लास्ट वीक, यस आई कुड सी दैट। एंड बहुत सारे लोगों ने आपका फीडबैक भी दिया है, वो मैं पढ़ लूंगा। सो मैं सभी लोगों को whoever is there in this webinar podcast, तो आप सभी लोगों को एक जेनेटिक रिवोल्यूशन आगे आने वाला है इन द नेक्स्ट 3 years, 5 years, 10 years, इवन इन इंडिया। तो उसके लिए मैं इनवाइट करूंगा कि इसका हिस्सा बने through understanding, through sharing this knowledge and talking about this to others and also participating with us। अगर आप ऑलरेडी एक सर्टिफाइड हेल्थ कोच हैं या आपने सर्टिफाइड जेनोमिक वेलनेस कंसल्टेंट बने हैं बाय डूइंग आवर कोर्स सीसीएनजी सर्टिफिकेट कोर्स इन न्यूट्रिजेनोमिक्स, विग्नेट ने जो दिया हुआ है, यू कैन स्कैन दिस क्यूआर कोड एंड आप हमारे एक एफिलिएट बन सकते हैं।
ओके एंड अगर आप एफिलिएट बनेंगे तो देन विल टेल यू एग्जैक्टली, उसके लिए एक सेपरेट मीटिंग जूम वेबिनार रहेगा कि एज ए एफिलिएट आपका क्या रोल है. सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस if you are an affiliate. तो there is a free registration that you can do using this link. And अगर आप एफिलिएट बनने के लिए जैसे अपने वेबसाइट में जाते हैं तो यू कैन सी हियर रजिस्टर नाउ. इट्स एब्सोल्युटली फ्री, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, फ्री रजिस्ट्रेशन है. And then you can get involved with us as a volunteer, as an entrepreneur, as a genetic professional. And वहां पे आपको ये पूछा जाता है कि कौन सा बैच आपने किया है, HCP का हेल्थ कोचिंग प्रोग्राम का बैच नंबर क्या है, या CCNG का क्या बैच है, वो आपको पूछा जाएगा. जस्ट सबमिट इट एंड देन विल सेंड योर यूजर आईडी पासवर्ड, जिससे कि आप एफिलिएट पैनल को आप देख सकते हैं. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, कई सारे लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है कि इट्स बीन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वंडरफुल सेशन. अगर आप जेनेटिक्स में, जेनोमिक्स में, न्यूट्रीजेनोमिक्स में, एपिजेनेटिक्स में अपना पकड़ को और मजबूत बनाना चाहते हैं तो वी हैव दिस इंस्टीट्यूट कॉल्ड वेलोसिटी इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स, न्यूट्रिशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग. ये आपको देता है एक डिटेल में 2 months ऑनलाइन एंड इंटरैक्टिव कोर्स. यहाँ पे अभी हम लोगों ने 1 घंटा स्पेंड कर लिया. देन वी आर गोइंग टू हैव a 2 months course which has 16 online classes of 2 hours each. So that means 32 hours का detail. And उसके बाद में you will get detailed explanation on foundations of nutrition, fundamentals of genetics. So there are different sections. Then we have foundational nutrigenomics. So genetics और nutrition का क्या correlation है. And then we have the science of epigenetics. So 4 sections of 12 chapters each, 48 chapters. And then we have another 2 chapters of understanding genetic testing and curating action plan, personalized action plan हमारे client के लिए हम लोग कैसे बना सकते हैं. तो उसमें आपको कम से कम 150-200 वीडियोस छोटे छोटे देखने पड़ेंगे. वी हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड कि आपने ये कोर्स को सही तरीके से किया है या नहीं है. एंड देन वी आल्सो हैव अ ऑनलाइन कॉन्वोकेशन सेरेमनी. दुनिया के कोई भी कोने से आप ज्वाइन कर सकते हैं. वी ऑलरेडी हैव students in this batch from USA, from Switzerland, and also from UAE and all over India. So ये जो टेक्स्ट आपको मिलेगा, सिलेबस मिलेगा, इसका आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा. एंड अगर आप we have 9 seats left in this course, so there is a particular batch size. So अगर आप कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, you can take a screenshot of this. तो you can then get back to our team as well. So कोर्स का नाम क्या है, what विग्नेट क्या है, बैच 14 के डिटेल्स. we are starting on 29 January, that's next Wednesday. And 8 week आपको Wednesday and Friday classes रहेंगे 2 hours each. And the classes will be taken by Riddhi Shah, who's going to be taking almost like 70% of the course, and बाकी 30% मैं भी लेने वाला हूँ. We also have our other team members. And class का timings, class का date, convocation का date, certification and everything is written here. Please take a screenshot if you want to. अगर आपने कोर्स करना है तो आप अपना मोबाइल नंबर को आप दे सकते हैं. एंड you can do this. Now, जैसे मैंने आपको बता दिया, last week we had Dr. Amol, this week we had Dr. Nikhil, and next week we are going to have Dr. Kedar Tambe. He's working very closely with the Symbiosis University and also the hospital there. He is an expert in the field of predictive healthcare and genetics as well. तो उनको हम लोग सुनेंगे. It's going to be a very very interesting. So वो बात करेंगे. Know your own genetic operating system. Computers चलते हैं operating systems, फ्लाइट्स उड़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में. हमारे लाइफ में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है उसको देखना जरूरी है. अगर नहीं देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी. तो प्लीज अटेंड दिस वेबिनार, एब्सोल्युटली फ्री. यू कैन ऑल्सो, जब भी आपको लिंक मिलेगा, यू कैन ऑल्सो सेंड इट टू अदर्स एंड देन वी कैन हैव this education gained together with Dr. Kedar Tape. So one last piece of advice I would say that Rakesh Junjunwala, India's Warren Buffett, इसको बोलते हैं कि उन्होंने ये कहा कि भाई मैंने हर जगह पे इन्वेस्ट किया लेकिन हेल्थ के लिए इन्वेस्ट करना भूल गया. एंड दैट्स द रीजन फिजिकली ही इज नो मोर विद अस, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ एंड हेल्थ इज मच मोर बेटर एंड बिगर देन वेल्थ. सो थैंक यू सो मच, आपने इस वेबिनार को अटेंड कर दिया. ऑन बिहाफ ऑफ फिट भारत मिशन एंड वेलोसिटी जेनेटिक्स, आई लाइक टू से गुड बाय एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू. टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर फीडबैक. I can see a lot of feedback which I'll be sending it to Dr. Nikhil. And Dr. Nikhil, once again, thank you on behalf of each and every one of us here.
and keep coming to attend these webinars every week, and we're going to have the CCNG batch starting. अगर आपको इसके बारे में जानना है तो you can definitely get back to us through various sources. So thank you very much. Goodbye and